I'm not looking for any kind of support. I'm just telling you my private beliefs, what I discovered, and I think religion is for self-discovery, and unless and until you do self-discovery, there's no God. This is my personal opinion, and मुझे किसी का support नहीं चाहिए. मैंने अपनी opinion बोली है, मैंने अपनी नीयत मुझे पता है, मेरी नीयत मुझे पता है. That's my stand. We're not supporting you to support. And I've been and I check Kare Rahman ji. Can we have it full? I could not hurt you. Are you saying that religion is for the one sec. What do you mean? One sec. अगर कुरान और हदीस के हवाले से कुछ दूर बात मिस्टर रहमानी, आप पूरी बात तो सुनिए मिस्टर रहमानी, पूरी बात सुनिए. What were you saying, Mr. Am I heard clearly? Mr. Sarishwar. One thing, see, in Islam, everybody has right to speak. Islam is not religion for clerics or certain people. So Irfan has all the right to speak, and it is his prerogative. If you have problem with him, give your opinion. But nobody has. Islam gives right to everybody to speak. Yeah. And Prophet says it's your direct relationship with him. It is between God and God. Between you It is and only- him. Yes. Yes, और वो तुम्हारे साथ है. No, और Irfan. मेरी जिंदगी है उसको टेस्ट करने के लिए. There was one dialogue in my film, Life of Pi. Please, if you have time, I'll say that. The Pi says, faith is a house with many rooms. Many rooms. The other person asks him, there's no room for doubt. He says, plenty. In every floor. Doubt is a useful thing. It keeps your faith alive. Unless and until you test, your faith is not alive. That is what I test my teachings, and I experience myself, and that's how you work on your soul. कानून शरीयत के तहत अगर उस ज़िंदगी को हम गुजारते हैं तो ज़्यादा बेहतर है. इरफान, आपने यकीनन बहुत अच्छी तरीके से दुनिया को समझाया है, और इस बात में थोड़ा सा जुमला कहना चाहूँगा, एक छोटा सा सेंटेंस अल्लाह उसके रसूल के कलाम से, कि यकीनन आपका ताल्लुक अपने रब के साथ डायरेक्टली है. मेरे पैगम्बर ने कह दिया है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारा रब तुम्हारी शहरक से ज़्यादा करीब है. लेकिन उसी रब ने हमारे सामने कानून दिया जो रसूलुल्लाह ने बताया है कि इस पर अमल करने उसको समझने के लिए मुझे कोई चाहिए नहीं, कुरान चाहिए ना. वो मैं समझूंगा. लेकिन वो कह रहे हैं आप मेरी बात सुनिए, आप दूसरों की बात सुनिए. कुरान ने किस लहजे पे, चूंकि शान नुज़ूल क्या हुई, अल्लाह के रसूल ने फरमान ये क्यों जारी कोई किया? एक आदमी आता है, वो कुरान शरीफ की आयत का एक मतलब बताता है, दूसरा आदमी दूसरा मतलब भी बता सकता है, तीसरा आदमी तीसरा ही बता सकता है. ट्रांसलेशन की मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि एक ही चीज़ को कितनी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दिया जाता है, और उससे लोगों को बलगलाया जाता है, उससे लोगों को गलत रास्ते पर डाला जाता है. लेकिन आप तो समझदार हैं, कंट्रोल किया जाता है. अक्ल सलीम अल्लाह ने आपको दिया है, हर एक इंसान को अल्लाह ने अक्ल सलीम दिया है. अक्ल सलीम वो है जो आपके पास अल्लाह की तरफ से दी हुई है. आप उसको सामने लेकर के बैठ जाएं कि ये हमारे लिए गलत है या सही है, डिसाइड करने आपके पास है. कुरान और हदीस के साथ, लेकिन कुरान और हदीस के साथ, उससे हट के नहीं. एक सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे जो मुझे लगता है, मैंने जिंदगी में समझा है, मैं कुछ दिन पहले तक, कुछ सालों तक मैं कहता था अपने बच्चे को, आई एम प्राउड ऑफ यू बेबी, बट मैंने वो शब्द को इस्तेमाल करना बंद कर दिया अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जहाँ मैं कहता हूँ आई एम प्राउड ऑफ दिस, आई एम प्राउड ऑफ दिस, आई एम प्राउड ऑफ दैट, मैं अहंकार को बीच में ला रहा हूँ, मैं गुरूर को बीच में ला रहा हूँ. बिल्कुल मैं कभी भी, मतलब इसीलिए मैं उस लफ्ज़ को मैंने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया है. मैं अपने बच्चे को वो लफ्ज़ का बार बार उसको कहना नहीं चाहता, ना ही उसको एसोसिएट करवाना चाहता हूँ. गुरूर, तकब्बुर किसी भी चीज़ पे वो ठीक नहीं है, वो गलत रास्ते पे ही लेके जाएगा. वो ये बोल रहा है कि जिस पे मैं गुरूर कर रहा हूँ वो बड़ी है, बाकी सब छोटा है. मुझे नहीं सिखाया, मेरे इस्लाम ने मुझे नहीं सिखाया गुरूर करना. यकीनन इस्लाम किसी को गुरूर नहीं सिखाता है. यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी बात यह है कि आपकी ज़िंदगी जीने का सलीका आपके पास अल्लाह ने यकीनन दे दिया है, हर एक इंसान को सौंप दिया है. वो बस ये है कि हमें ज़िंदगी जीने की एक किताब दी है, हम उस किताब की रूह से चलें, हमें किसी की सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है. इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझते हैं, और आपने दुनिया के सामने आज वाज़ेह भी कर दिया है कि हमारा इंटेंशन ये नहीं था कि कुर्बानी ना करो, लेकिन आपके जो लास्ट गोल थे उस दिन जो इंटरव्यू के अंदर में, कि सिर्फ 2 बकरा ला कर कुर्बानी कर देने से कुर्बानी नहीं होगी, ये जुमले थे. आप इसको ध्यान रखें. आप चाहें तो सुन सकते हैं. मेरे पास है कि लास्ट 2 बकरे मार्केट से लाए और सुबह पे आज दर्द होना चाहिए. आज एक ऐसा जानवर जिसको आपने साल भर पाला और फिर कुर्बानी की, वही ये कह रहे थे कि जाके खरीद सुबह लेकर के आए और कुर्बानी असल तरीका जो है वो ठीक है क्या? वो तरीका ठीक है? कुर्बानी ला, वो तरीका ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं. नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए. नहीं, तरीका जो है आपने कहा. उससे सवाब मिलेगा, मुझे बताइए. मुझे सवाब मिलेगा अगर आप बाजार से लेके गए लाके खरीद के लाया, आपने कुर्बानी कर दी, कुर्बानी के दिन, वो सवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा.
میں سمجھنا چاہوں گا. ہاں سمجھنا چاہوں گا, میں اس کو تھوڑا سا واضح لفظوں میں سمجھانا چاہوں گا. بہت صاف ستھرا قرآن مقدس میں حکم دیا قربانی کرنے کا, اور اس دن وہ کسی اور دن اس پروگرام کی بات. اچھا عرفان, جو لوگ ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں and all kinds of reactions are coming to what you're saying out here, a lot of support is coming there for you. This whole episode, یہ جو ہوا جی, یہ جو ہوا, آپ کی فلم ریلیز ہوئی, ارے تسلیم رحمانی جی مجھے دو وقت آپ تو آج آپ پھر سے ایک سیکنڈ, بس ایک سیکنڈ, اگر کل عرفان بھائی کہنے لگیں کہ مجھے شراب پینا میرے لیے ضروری ہے اور شراب کو حرام نہیں ہونا چاہیے, تو کیا ساری دنیا تو میں اسلام کا سہارا تھوڑی لوں گا اس کے لیے. آپ جواب دیں. تسلیم بھائی, میں اس کا اسلام کا سہارا تھوڑی لوں گا, وہ میں اونس اپنے پہ لوں گا. اگر مجھے کسی سے بدلہ لینا ہے تو وہ میں اسلام کو بیچ میں نہیں لاؤں گا. اگر آپ مانتے ہیں نہیں, میں اسلام کو بیچ میں نہیں لاؤں گا. ماننا پڑے گا, اس کے لیے ادھورے اسلام کو نہیں مان سکتے. اس کے لیے میں اسلام کو بیچ میں نہیں لاؤں گا. ون آئیڈیالوجی یو ہیو ٹو بلیو اٹ ان کمپلیٹ ان ٹوٹو. نہیں, میں اس کو اسلام کو بیچ میں نہیں لاؤں گا, میں اس کا استعمال نہیں کروں گا. اسلام you will agree and half you will not. No, Mr. Rahmani, you're not getting what he's saying. میں اگر شراب پیوں گا تو میں اس میں اسلام کو بیچ میں نہیں لاؤں گا. میں اس میں اس کے کہیں اپنے چالاکی سے اس کے طریقے نہیں ڈھونڈوں گا اس کو مس انٹرپریٹ کرنے کی. وہ میری چوائس ہے. claim that you are a Muslim, every law of Islam will be applied to you. If you will consume alcohol being a Muslim, admitting that you are a Muslim, that you are punishable. میں تو میرے لیے میں نے جتنا اسلام میں مسلم ہوں وہ تو آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میں مسلم ہوں کہ نہیں ہوں. میں پیدا ہوا تھا اس فیملی میں, اور جتنا میں سمجھ I have no right to decide. نہیں تو پھر آپ تو پورا لا بتا رہے ہیں کہ میرے پاس پتہ نہیں کیا کیا کتنا الزام لگ جائے گا, مجھے سزا ہو جائے گی. I'm just quoting an example. If any Muslims come out and consume alcohol, it is forbidden in Islam. And nobody on earth can. تو اگر کوئی کنزیوم کر رہا ہے, not be forbidden in Islam. Islam has to be applied in toto, not in particles. کیسے ہوگا اپلائی؟ وہ اسلامک نیشن بنے گا تب کہاں ہوگا وہ اپلائی؟ It's not that. Wherever there is Islamic law, it's a crime under Islam. ہاں تو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کروں گا. I'm just quoting an example that you cannot evade. And Muslims all over the world, if they believe in Islam, most of Muslims. No, I think one second. I think go back one second. I think go back to the relevance of what Irfan said. No, one second. No, one second. Mohandas Pai listening to this debate, an attempt is being made to corner Irfan, but I don't think anyone's being successful. He's speaking from his heart. He's speaking from logic. I don't understand what the idea here. Mufti Ziai, you have tried. Taslim Rahmani has tried, but Mohandas Pai truly, I mean, what he's saying, it just makes a lot of sense. He's calling for introspection, Mohandas Pai. I don't understand, Mr. Pai, the reaction that we are seeing. It makes a lot of sense. He's expressing his opinion, which is entitled to. He's entitled to his opinion. He's expressing an opinion as a true follower of his faith. I think people must respect his opinion. If they disagree, it is all right. Why beat him down? Why are you trying to beat him down? Yeah. Okay. Now, I said one thing. If there are Mr. Rahmani, now I'm short of time. Okay. My last question. One second. My last question is, once we're really short of time limit. My last question to you, Irfan, is this whole episode. Does it put you anywhere on the back foot? Are you going to be more careful? Are you going to dodge these questions when they put you in public forums, or will you speak out more? There are two aspects of it. One, that logon ko people who are relaying my thoughts, they might construe it. Or people who are understanding, they might not get the same. What I've said is said by Mufti of Jaipur in Jama Masjid. But پتہ نہیں کیوں لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکالا. لیکن میں اپنی بات روکوں گا نہیں. میں ضرور ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈوں گا جہاں کے بات ڈسکشن کیا جا سکتا ہے. میں تو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گا, اور میں اس میں مجھے کسی طرح کا کوئی, میں بیک فٹ پہ نہیں ہوں. لیکن میں اب اتنا کیئرفل رہوں گا کہ میری بات میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ میری بات کو غلط طریقے سے تو نہیں استعمال کیا جا رہا. جی, یہی تک وہ غلط پہنچ گئی میری بات. وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی صاحب, ان کا نام کیا ہے؟ تسلیم رحمان. یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے بھائی صاحب, ان تک یہ سن رہے ہیں میری بات, اس کے باوجود غلط سمجھ رہے ہیں. تو یہ کمیونیکیشن, ایکچولی کمیونیکیشن کا پرابلم یہ ہے. کمیونیکیشن لگتا ہے کہ ہو گیا, وہ سب سے بڑا ہوتا نہیں ہے. میں غلط نہیں سمجھ رہا, آپ غلط سمجھانے کی کوشش میں ناکام ہیں عرفان صاحب. آپ غلط سمجھانے کی کوشش میں ناکام ہو رہے ہیں. میں خوب اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں اور کیوں بول رہے ہیں. بہت اچھے سے جان رہا ہوں میں.
لیکن آپ سمجھا نہیں پائیں گے مجھے اس طریقے سے. میں نے آپ کو سمجھا دیا, آپ شراب بھی پیئیں گے, آپ زنا بھی کریں گے, آپ دنیا بھر کے غیر اسلامی کام کریں گے, اور آپ مسلمان. ابھی تسلیم رحمانی بہت بات ہوگی آج. اسلام میں نہیں مانوں گا. اچھا دیکھیے تسلیم رحمانی, آپ پھر کہیں گے بحث کرنا بھی غلط ہے, پھر ہم نیوزار ہمیں بند کرنا پڑے گا. ہم تو بحث میں بلیو کرتے ہیں, بحث کرتے رہیے. آج جو ڈیبیٹ ہوئی اس پر بحث باہر ہو. Let this debate be among the people watching the program tonight. I'm glad Irfan has put his point of view out. I think there are a lot of people supporting him. I'm glad that you've spoken up openly. Thank you, sir. And congratulations on your film. Thank you very much, Irfan. Thank you, sir. Big fan. Thank you very much, Irfan. Thank you. Well, that's it. That's it on the news. That's it on the news at night. I'll see you on the other side. That's the end of debate number 2 this evening.